हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेपस्टार्ट। गाइस, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हियर वी आर प्रोवाइडिंग यू विद द ओवरव्यू ऑफ द डे, जहां हम लोग डिस्कस करते हैं 10 टॉप स्टोरीज टू बूस्ट अप योर डेली प्रिपरेशन। आप लोग हमारे पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि बाइलिंगुअल अवेलेबल है, और उसे डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। So moving on to the first story here, International Day of Human Fraternity is being celebrated for the first time on 4th of February 2021. The day aims to underline the importance of raising awareness about different cultures and religions or beliefs and the promotion of tolerance. इस साल इसे पहली बार सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऑल्सो दिसंबर 2020 में द यूएन जनरल असेंबली adopted a resolution to declare this day as International Day of Human Fraternity. इस साल की थीम है A Pathway to the Future. सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टोरी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बात करें, सेक्रेटरी है जनरल एंटोनियो गुटेरेस टाइप। इट इज़ अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स इनकी न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स में, और इस्टेब्लिश की गई थी 24 of October 1945. So moving on to the second story now. Vikram Singh Bedi has been appointed as the MD of Google Cloud. So the Google Cloud has announced the new appointment here of Vikram Singh Bedi as the managing director of its India business. With the current appointment, Bedi will succeed Karan Bajwa, who was recently elevated as the vice president of Google's Asia Pacific Cloud. Also, he joined Google Cloud from Indian online grocery startup Grofers, where he served as president strategy and in new initiatives. So related to Google, हम लोग अगर थोड़ी बात करें यहाँ पे, फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, सीईओ सुंदर पिचाई, हेडक्वार्टर्स इनकी कैलिफोर्निया यूएस में है, एंड एस्टैब्लिश की गई थी 4th of September 1998 को। सो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये एक स्टोरी आप लोगों के लिए दिया गया है। सो नाम जरूर याद रखिएगा, एंड ऑफ कोर्स द पोजीशन। मूविंग ऑन टू द थर्ड स्टोरी हियर, युद्ध अभ्यास to begin in Rajasthan from 8th of February. The 16th edition of Indo-US joint military exercise Yuddha Abhyas will be held in Rajasthan between 8th of February to 21st of February 2021. The exercise aims at enhancing cooperation and interoperability between the two armies and will focus on counter-terrorism operations under the United Nations mandate. The 11th Battalion of Jammu and Kashmir Rifles, part of the Southwestern Command, will represent the Indian Army. So guys, युद्ध अभ्यास जो मिलिट्री एक्सरसाइज है, आप लोग नाम जरूर याद रखिएगा। कब से कब तक सेलिब्रेट किया जाएगा? इट विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 8th to 21st of February. कहाँ होगा? राजस्थान में। सो मूविंग ऑन टू द फोर्थ स्टोरी हियर, एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह has been appointed as the AOC in chief. So he takes over from Air Marshal Amit Tiwari, who has been posted as Chief of the Central Air Command. He has held a number of command and staff positions. Also, he has commanded various frontline air bases besides heading the IAF peacekeeping contingent in Bukavu in Congo. So Indian Air Force से related हम लोग अगर थोड़ी यहाँ पे बात करें, Commander in Chief President Ramnath Kovind, Chief of the Air Staff, of course, it's Air Marshal राकेश कुमार सिंह भदौरिया। हेडक्वार्टर्स इनकी इंटीग्रेटेड डिफेंस जो कि न्यू दिल्ली में है, एस्टैब्लिश की गई थी 8th of October 1932 को। That was all for the fourth story. Moving on to the fifth story here. New State Administrative Council of Myanmar. So इस स्टोरी में आप लोगों को बताया जा रहा है कि द regime in Myanmar headed by the army has announced a new state administrative council. This council will be headed by the Army Chief General Min Aung Hlaing, has 11 members out of which 8 are from the military. यहाँ पे और एक इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जो कि the Union Election Commission will be reconstituted for implementing the duties and function. म्यांमार से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे, प्रेसिडेंट मेन स्वे, कैपिटल उनकी नाइफिदाओ, करेंसी क्याट, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज ऑफ कोर्स बर्मीज. So moving on to the sixth story. Udan takes off in Dholpur. A unique adolescent health program titled Udan Tara
was launched in Dholpur, Rajasthan on 2nd of February 2021. It will soon reach over 1,50,000 students of classes 6 to 12 in all 1,151 government and 400 private schools in district through well-trained teachers as the part of this curriculum. The content of the Udan Tara Teacher Students Adolescent Health Dialogue has been organized into 5 modules. So नाम जरूर याद रखिएगा, उड़ान तारा कब से कब तक and कब इसे इनिशिएट किया गया है, that is from 2nd of February. Of course स्टेट भी इंपॉर्टेंट है जो कि राजस्थान. मोर ओवर राजस्थान से रिलेटेड अगर हम लोग थोड़ी बात करें, यहाँ पे सीएम वहाँ की अशोक गहलोत, गवर्नर कालराज मिश्रा, कैपिटल जयपुर एंड ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ कोर्स हिंदी. So moving on to the 6th story. Antonio Gutierrez honored with the Zayed Award. UN Secretary General Antonio Gutierrez and French Moroccan activist Latifa Ibn Ziatin are the co-recipients of the 2021 Zayed Award for Human Fraternity. The award was inspired by the document on human fraternity, which was signed by Grand Imam Al-Taib and Pope Francis on 4th February 2019 in UAE's capital. The award carries a cash prize of $5 lakh and related to Antonio Gutierrez अगर हम लोग थोड़ी बात करें, he is the 9th Secretary of the United Nations, born on 38 April 1949, nationality Portuguese, political party Socialist, Alma Mater Instituto Superior Técnico, University of Lisbon. Moving on to the 8th story here. Mexico approves Russia's Sputnik 5 vaccine. So जरूर याद रखिएगा, मेक्सिको ने स्पुतनिक 5 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है. ऑल्सो मेक्सिको से रिलेटेड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन. प्रेसिडेंट एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर, कैपिटल उनकी मेक्सिको सिटी, करेंसी मैक्सिकन पेसो, नेशनल लैंग्वेजेस स्पेनिश. सो मूविंग ऑन टू द 9th story. Virat Kohli is India's top celebrity endorser. Indian cricket team captain Virat Kohli retained the top celebrity endorser rank for the 4th consecutive year in 2020 Duff and Phelps Celebrity Brand Valuation Report. His brand value stands at $237.7 million and Akshay Kumar retained the second position with a brand value of $118.9 million, registering a 13.8% jump. Ranveer Singh maintained the third position with the brand value of $102.9 million. So this is something really interesting कि रैंक 1 पे है आपके विराट कोहली, रैंक 2 पे अक्षय कुमार एंड रैंक 3 पे है रणवीर सिंह. रिलेटेड टू विराट कोहली हम लोग सभी जानते हैं, इज द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, born on 5th November 1988 एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है. मूविंग ऑन टू द फाइनल शोडाउन स्टोरी ऑफ द डे. Chorichora centenary celebrations is being done on 4th of February 2021. The day marks 100 years of the Chorichora incident. He also released a postal stamp dedicated to the Chorichora centenary during this event. The UP government has launched a dedicated website, chorichora100.com, to sensitize the people about the sacrifices of great freedom fighters. So the Chorichora incident के बारे में अगर हम लोग बात करें, Chorichora is a town near the Gorakhpur, Uttar Pradesh, India. Police shot and killed several demonstrators who were participating in the non-cooperation movement, and police station was set on fire by the protesters, resulting in the deaths of at least 22 policemen. Date, of course, it's 4th February 1922. Guys, that was all for the day. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम है हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. आप लोग हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं. ऑल्सो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े. So that was all for the day. Thank you and have a nice day.